and the final position is B. So the shortest distance, what is the, now comes distance. Now what distance is? Length of path. Correct. Now displacement. Shortest path. Now you can see displacement. यहाँ पे कुछ मिस हो गया. P L A C. Now displacement is the shortest T missing है, T लिखना भूल गए थे. The shortest path, and distance is the length of the total path. Now from the figure itself you can observe the distance cannot be smaller than the displacement. Distance cannot be smaller than the displacement. Let us take another example. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. Say this is point A and this is point B also, and this is the path. So what is the displacement? Who can answer? What is the displacement? Nilesh Raj. Yes, Nilesh. Nilesh? Sir, the displacement is 0. Exactly. The displacement is 0. But what is the distance? Is the distance 0? No, sir. Yes, the distance is not 0. So what did we understood that for a particular, in a particular case, the distance cannot be 0. Distance किसी हाल में 0 नहीं हो सकता. If the body has traveled in a certain path, the distance cannot be 0, but the displacement can be 0. Now, I say you one more example. I give you one more example. Okay. Someone, Nilesh, बहुत आवाज आ रहा है. Okay, I was about to give you the example. So say you have to move from the point A से B तक जाना था, and say this is 10 meter. Correct? हम लोग को जाना था A से B तक. हम लोग को पता है कि 10 मीटर की दूरी है, मगर हम लोग क्या किए, हम लोग चल गए यहां तक, जो कि 10 मीटर की दूरी है. करेक्ट? समझ में आया सिचुएशन? समझ में आया? वी हैव टू मूव फ्रॉम A to B. हम लोग को A से B तक जाना था, मगर हम लोग क्या किए, A से C तक चल गए. नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? Anyone who can answer? What is the displacement? We supposed to travel from A to B, but we had traveled from A to C. Yes, Nilesh, once again. Sir, we traveled to A to C. Then the displacement is 10 meter. Okay. Another guy who raised the hand, I think, who's that? Another one person who just raised the hand. Once again, can you? कौन था?
नीलेश था और एक कोई था, हम भूल गए। ओके, पता नहीं, नाम भूल गए। डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, बट दैट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। हम लोग को जाना था एक्चुअली ए से बी के तरफ, है ना, तो इधर पॉजिटिव होता, मगर हम लोग चल गए क्या, ए से सी के तरफ, तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, माइनस। मजे की बात है सर, माइनस क्यों होगा, हम लोग तो उधर गए ही नहीं, पता है। नाउ आई डोंट हैव द स्केल ओवर हियर। स्केल होता तो हम बता सकते थे कि बढ़िया से, यू हैव सीन द नंबर लाइन, नंबर लाइन यूज किए हो। जब हम लोग नंबर लाइन से पॉजिटिव डिस्टेंस बोलते हैं, से यू हैड बीन आस्क्ड टू पॉइंट 5, मार्क 5, नंबर लाइन पे 5 रिप्रेजेंट करने बोला गया, तो हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं। से आई एम ड्रॉइंग द नंबर लाइन, से दिस इज 0, हम लोग को मार्क करने बोला गया है 5, तो हम लोग किधर मार्क करेंगे क्या, 5? कभी कहिए नहीं। Why? Because every time we had treated towards the left of 0, any number is negative, and towards the right of 0, any number is positive. इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। शायद हम लोग सीखे हैं क्लास 6 में, 5 में, नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना सीख गए थे। सो दिस वे वी कैन ऑब्जर्व दैट द डिस्प्लेसमेंट can be negative too. डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, मगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव, हाँ आ रहे हैं, एक सेकंड आ रहे हैं भाई।
ओके, सो हम लोग क्या देखे कि डिस्प्लेसमेंट, यस कम बैक ऑल ऑफ यू दोस हु आर वर मिसिंग or left for some time. So difference between distance and displacement दिया हुआ है. Difference between distance displacement नहीं कुछ नहीं है. So what did we understand? What is the difference between distance and displacement? Distance is the length of the total path traveled, and displacement length of the shortest path between the starting point and the end point. Then this distance cannot be zero or negative, but displacement can be zero or negative. Distance is a scalar quantity, whereas displacement is a vector quantity. These are the differences between the distance and displacement. Hopefully it is clear to all of you now. So before we start our discussion, carry on our discussion, let me take the attendance first, because that is important. This is 7A. So for taking the attendance, I'm going to stop the sharing of screen and take the attendance first. Yes. Now, the first one is Aditya Raj. Aditya Raj. My pen. इतना सारा सामान किसको छोड़े किसको रखे. Yeah. So first one is Aditya Raj. Aditya Raj, for the first time in the class. Amaya Anand. Then we have Akansha Bharti Richa. Then we have Akshay Sambhav and Anupam Kumar and Ayush B. Ayush Bharti, obviously, I think. Yes. Then Ayush B के बाद है ईशा आर्या. Isha Arya. Then we have Janvi Kumari. Then Komal Kumari. Komal Kumari. इसके बाद है कृष कुमार. वाह, कृष कुमार पढ़ने में बड़ा तेज है. पहली बार क्लास आया, फर्स्ट टाइम. कुमार आलोक. Then Kumari Komal Priya. Abu Samar. Then Mehul Raj. Mehul Raj. Then we have Nandini. नंदिनी के बाद है नीलेश. नीलेश के बाद है निताशा. उसके बाद है राजीव कुमार. राजीव कुमार. नाउ राजीव के बाद है राजनंदिनी.
राजनंदिनी, राजनंदिनी इज देयर। अच्छा, उसके बाद है रौनक, प्रियदर्शी, रौनक प्रियदर्शी। उसके बाद है ऋतिक कुमार, देन सेविन जॉनी, सेविन जॉनी, देन शानवी सुमन, शानवी सुमन। बस, और ज्यादा नहीं है। सिप्रा सिंह, सिप्रा सिंह। उसके बाद है शुभम कुमार, शुभम कुमार। Then we have Soumya Priyadarshini. Then Sumit Kumar. Sumit Kumar. Sunny Raj. And last one is Utkarsh Kumar. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। एक जन अभी अभी भाग भी गया, 29 में से एक घट गया। ओके, नाउ सो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर वेक्टर की बात कर लिए और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कर लिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्पीड एंड वेलोसिटी। So what is speed? Speed is the distance traveled in unit time. Speed is the distance traveled in unit time. मतलब, say you had taken 5 minutes to travel 1 kilometer, means 1000 meter. You had taken 5 minutes. So what is your speed per minute? I think all of you had done that in class 5, class 4, and class 6 also. We divide the distance by time. We get the speed. Now, what is distance? Which type of quantity is distance? Distance is a scalar quantity. So, the speed will also be a scalar quantity. As the distance is a scalar quantity, the speed will also be a scalar quantity. But if we talk about velocity, velocity is displacement per unit time. Velocity is the displacement per unit time. So you know, displacement is a vector quantity. Displacement is a vector quantity, and when we divide it by time, another scalar quantity, it remains a vector quantity. That means the velocity remains a vector quantity. Speed is scalar quantity and velocity is vector quantity. Mehul Raj. Okay, now this way we can observe what is a vector and what is a scalar. Scalar quantity doesn't have direction, vector quantities has a particular direction. Okay, now let us talk about another section, or we take it little forward today. Speed, velocity, पिछले दिन भी किए थे. Now comes the different types of motion. Speed is given, uniform and non-uniform motion. When a body travels equal distance in equal interval of time, when a body travels equal distance in equal interval of time, we say the body is in uniform motion. For example, say a body travels 5 meters every minute. हर मिनट में 5 मीटर ट्रेवल करता है. अगर वो कंटिन्यू हर मिनट में 5 मीटर ही ट्रेवल करता है तो वो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कभी कभी ऐसे भी होता है, a body traveling 5 meter in 1 minute, then 3 meter in another 1 minute, then again 7 meter in another 1 minute. That means
the velocity or the distance traveled per unit time is increasing or decreasing. This we don't say uniform. We say it non-uniform or ununiform motion. When the distance traveled by a body in unit time remains same, we say the body is in uniform motion. And when the distance traveled in unit time varies from time to time, we say that is a ununiform, non-uniform motion. Non-uniform motion. Okay, that's all for today. It's already time. Get prepared for your next class. So those who have any doubt, we have just 2-3 minutes left. You can ask your doubts. If anybody have any doubt, you can raise your hand to ask your doubts. No. Okay, fine. Then get prepared for your next class. Yes, Mehul. Mehul. Sir, sir, what is scalar quantity? अरे बाबा रे, 2 दिन से पढ़ा रहे स्केलर क्वांटिटी. That means Mehul, you are not attending the class. You are not sitting in front of the device, isn't it? ये साफ है. आप जो है डिवाइस ऑन करके भाग जाते हो. हम 2 दिन से स्केलर बताए, अभी भी स्केलर वेक्टर का डिफरेंस बताए. You are not attending the class. Okay, what is the scalar quantity? The physical quantity that have magnitude only, but doesn't have direction. We say them scalar quantity. Akshay. Sir, non-uniform motion. Non-uniform motion. Non-uniform motion क्या है? When a body travels different distance in same interval of time. एक ही टाइम इंटरवल में क्या करता है? अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है. फॉर आई गिव यू द एग्जांपल राइट नाउ that in a particular time interval, say in 1 minute, you ran 10 meter. In second 1 minute, you had walked 3 meter. आप पहली बार में दौड़े थे तो ज्यादा दौड़े होंगे, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं. बाद में पैदल चले, थक गए, पैदल चले तो कम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं. तो ये जो मोशन है इसको बोला गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके अक्षय, समझ में आया? Yes, sir. Okay then. Yes, sir. Okay. Anyone else have any other doubt? No. Just a few minutes left if you want to ask your doubts. Okay then, we are closing down. Those, if anybody wants to raise your hand, raise your hand right now. I had already clicked on end. Okay, no problem. And see you in the next class and get prepared for the next class.